Okay, friends, so let me initiate the discussion. GD topic I'm going to give you, and this topic was asked in recent one of the GDs in some PSU. The topic is money can't buy happiness. Please write the topic. Money can't buy the happiness. I repeat, money can't buy the happiness. I've typed it also. So I give you 2-3 minutes and then you think, then we started. Sir, can you start? Okay, so 1 plus first you write your name. Your name you write. So that at least others will refer you and I also give you feedback accordingly. Now, yeah, this is a group discussion and let me tell each one of you to unmute and you know the rules. One of you will initiate the discussion and then you will discuss comfortably and you are not to conclude till I tell you to conclude, right? So keep discussing and then we conclude at the end. Please go ahead now and start your discussion. Good morning, friends. Good My name morning, is friends. Vivek My name is Kumar, Piyush Bharti. and today topic of discussion Glad is to start the money. discussion. Today topic of I'm actually discussion. glad to start the group discussion. And the topic for today is money can't buy the happiness. So according to me, this is a topic, interesting topic, because from childhood we used to listen that money is everything. Okay. So according to me, this statement is not that true, because as we grow older, we come to know that this statement slightly keep aviating from this line. Okay, that for being happy, it's not only the money, because happiness requires a lot of things, like for being healthy, being physically fit, being physically, mentally peaceful. This all are okay. These all things are important for being happy, but money is just one of the factor. So I invite all my friends to participate in this group discussion, and this must be an interesting one. Okay. Exactly. Yeah. I agree with Piyush. I think money is something that can drive us to do work and to gain some kind of success. But I don't think it can be the reason for our happiness. Happiness is something that can be defined on a very personal level, and many things quantify it. So I feel, for example, on the social media, you can all see that people are showing their life to us, and sometimes they are not actually happy, but they need to show us so that we can watch their videos and try to be happy at times. Totally agree with I think Sarmishta. that I think The thing is that that the Sarmishta totally money says cannot that buy happiness, but you need some time to spend your time with your family. You need money sometime. If you want to go vacation, the money can. In this scenario, the money is very really helpful. yeah, I think totally that agree money with can be Vivek a Kumar. only tool जैसे for कि the making the life ये easier. जो It can provide us comfort and many more inside. It can come from small thing to big thing. Okay. नमन totally आपकी agree आवाज with नहीं you आ रही all. What एक्चुअली मैं I want to add इस a टॉपिक point. से पार्शियली अग्री करता हूँ कि देखिए ऐसे भी लोग हैं जिसके पास पैसा था वो भी हैप्पी है और ऐसे भी लोग हैं जिसके पास पैसा वो हैप्पी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे लेके चल रहे हो, आप कितनी पॉजिटिविटी रखते हो, आप अपने हेल्थ पे कितना फोकस रखते हो, आप आपके घर पे आपकी जो पेरेंट्स है आप उनको कैसे उनको बेटर लाइफ देते हो, तो ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। totally agree with Kalpesh. जैसे कि अगर मनी की बात किया जाए तो ये डिपेंड भी करता है। अगर हम छोटे एज पे बात करें कि वहाँ उस समय लोगों को उतनी समझ नहीं होती, जैसे हम लोग छोटे एज की बात करें तो वहाँ पे अगर मनी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग देते थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग की ग्रोथ हुई, हमने जैसे समझा, इन्वायरमेंट को समझा, वर्ल्ड को समझा कि क्या होता है, उसके हिसाब से मनी कांट बाई हैप्पीनेस। अब मनी की बात करें जैसे कि अगर जो युद्ध हो रहा है या जो भी हो रहा है, अगर आपका मनी है फिर भी आपके साथ वही होगा और नहीं भी हो तभी भी सेम हो रहा है, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। Yes, exactly. कार्तिक का point बिल्कुल valid है यहाँ पे, क्योंकि हम कई बार अपने happiness को quantify करते हैं pressure I level also पे agree with the कि statement that money cannot buy happiness for us. I think money is very important for each of us to survive in this world, for
our comfort and for living also money is required, but happiness is somewhat, as someone already said, that it's on a personal level. It's more related to the peace of mind. It's actually related to enjoying what we are doing. So we see various examples. हम कितने लोगों को देखते हैं जो बड़े names हैं, still they commit suicide or something like that. उनके पास बहुत पैसा है, but फिर भी एग्जैक्टली अगर हम ये अपने आप को Just रिलेट I करना want चाहे तो to मुझे लगे like हम सब money अभी we can जॉब की just तलाश one में minute, हैं, हम सब अभी चाहते हैं कि personally हमारी feel like एंट्री from लेवल my सैलरी personal point अच्छी of हो, view, लेकिन say एक from my टाइम के personal बाद point of हमें ये view, समझ I आता है कि if you सिर्फ और just see सिर्फ the when सैलरी we are में in the college, इंक्रीमेंट okay, और we are not सैलरी earning. ही सब नहीं होता, बट हमारे को कंफर्ट, जैसे कि हमारे घर के पास है अगर लोकेशन, तो वो ज्यादा हम चाहेंगे एज कम्पेयर टू सिर्फ सैलरी में इंक्रीज। आई डोंट थिंक सो एक टाइम के बाद हमारे लिए मैटर भी करेगा। जैसे कार्तिकी ने कहा कि कई Exactly, चीजें I totally एक agree with स्टार्टिंग में you. अच्छी लगती हैं, पर टाइम टू टाइम हमें अलग चीजों का कंफर्ट चाहिए होता है जिससे हमें हैप्पीनेस मिल सके। Exactly, I completely agree with you. I would like to I just say one thing that from my last point of view, from my last previous experience of my age, like mainly used to in the colleges, okay. Mainly used to in the college, we don't have money, but we are a lot happy because we don't have money, but still we are happy. But from my personal point of view, I'm still I'm earning a lot. Like I am earning say a little thing, but still I'm not happy being lonely in the home. No one to celebrate us, no one to celebrate the that money that I'm earning. Okay. So the happiness actually depends on a lot of factors. Money is one of them. Yes. Like yeah. जैसा कि वर्षा ने डिस्कस किया कि अगर बड़े लोग भी हैं तो वो भी सुसाइड कर रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो भी सुसाइड कर रहे हैं जो बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटी जिनके पास पैसा आता है। बट अगर ये बात करें कि जो जैसे कि पैसा इट इज important as of such extent, because of if you have not money you can't survive in this type of world. You can see the poor who are begging for the life. So money is important to such extent, but not it is so important that you can buy happiness from this. I'm agree with you. देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि जितना भी भगवान हमें देता है वो कम ही लगता है, भले कुछ भी हो या पैसा हो या सब कुछ हो। मेरा कहने का मतलब यही है, मेरा कहने का मतलब यही है। we need some required money for their life, but after that if you still continue to earn more and more money, you get in the loneliness which result in unhappiness. So टाइम क्या होता है कि मनी जब होती है तो लोग मेंटली से इतना हो जाते हैं कि ग्रिड पैदा होने लगता है। जब ग्रिड होता है तो कई बार तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई खुद लड़ने लग जाते हैं। तो बहुत ज्यादा मनी होने से अच्छा मनी मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। मनी सब कुछ नहीं होता है, I'm partially agree with you, but time management here is more important. If you have required money, if you have sufficient money, if you not manage your time, then you will not end in happiness. If you continue earning money, जैसे कि मनी से time management is also need for the happiness. Debating from the topic. If you are only focusing on career, that is not. जैसे कि कुछ लोग मनी की बात कर रहे हैं और हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, उन दोनों को अगर हम रिलेट करके बात करें तो अगर आपके पास मनी ज्यादा है तो हम कुछ गरीबों में बांट के उनके ऊपर हैप्पीनेस कर सकते हैं। तो दैट इज द ग्रेट that how we can use money, and so in this way money in this way we can buy happiness by money. One of the thing is that you need some time and you need some money also, because if you don't have time, you are only earning money, you will not end up in happiness thing. So if you have time and if you are required, if you have sufficient money, you will be happy. But if you have money, you go to your vacation with your family. You must have time just to enjoy the happiness that comes from money. Happiness is one of the parts that comes from the money. So you must have a time to enjoy that happiness that comes from the money. Okay. मैं partially disagree करता हूँ। मैं partially disagree करता हूँ विवेक के स्टेटमेंट से। मैं partially disagree करता हूँ विवेक के स्टेटमेंट से। आप देखिए, आप जितना ही पैसा कमा लीजिए वो कम ही रहेगा, लेकिन let's give time to speak Pooja. She wants to speak something. Yeah, exactly. Let's yes. मनी सब कुछ नहीं होता। मनी कमाने के लिए इंसान ये भूल जाता है कि उसके पास कितना टाइम है। अगर वो अपना टाइम फैमिली को भी देगा और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना करेगा तो उसको जो हैप्पीनेस मिलेगा के थ्रू वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उससे सबसे ज्यादा हैप्पीनेस मिलता है कि कितना वो टाइम अपनी फैमिली को दे रहा है और कितना अपने फैमिली के लिए वो उस मनी से कितना यूटिलाइज कर पा रहा है। टाइम प्लस हैप्पीनेस प्लस मनी बहुत
I just want to add one more happiness. line. I would like to add a This is point. from our parents. Okay, this is from our parents that are quoted that money can give you happiness. Okay, but if they are also somehow true that if you run behind the money, then you will realize that there are also other things that have to be explored. So there also ये हमेशा सही नहीं होता, जैसे कई But बार I गरीब think लोग भी होते हैं, non-stop उनके पास पैसा नहीं होता money लेकिन पीछे वो खुश भागना रहते हैं। not you realize the that problem everything जहाँ is not उसकी money. At the है same It is time, very you important non-stop that you work. पीछे Then you भागना will उसके get. कोई I just want to add one thing. beneficial इसको नहीं एक ही है। बोले, मनी एक नहीं ही सब बोले। कुछ नहीं हो सकता जिंदगी कभी में भी। लोग हमेशा You खुश have ही to जैसा run कि behind the money. सुखी रह You सकते हैं, just क्योंकि run आप लोग behind the money. हैप्पीनेस नमन समझ नमन से नहीं आता, नमन आप प्रोग्राम बोलिए, समझ के हैप्पीनेस नमन आप One by बोलिए, one. one by नमन आप one. बोलिए। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि जैसे मनी के पीछे भागने से भी एक तरह से सक्सेस की बात कर रहे हैं, तो मनी तो कमाने के कई तरीके हैं। तो मनी कमाने का ये मतलब नहीं कि हम रॉबरी करें या उसमें ज्यादा No, पैसा है वो। not that दिस money. इज Not We अबाउट that द require पैशन। the money money. that are No, coming no. from the जैसा education or I that would coming like from the I'm business. partially agree That with money, the Piyush. Piyush that is money saying that are that actually you need coming a from the skill sufficient knowledge. money to get a Just better want life. to add Yes, one thing. Piyush. The You're money right. that are that coming can from Money the required to that satisfy can you are be just earning our used as a say you are a basic needs. motivation. businessman, you are earning money. Say you have a business setup, you are earning money. That type of money that are coming from the skill set. That is important. The money can be Yes, earned. Piyush, you There are are a lot Yeah, right of things totally here. that money agree will with But Basic do. you. needs after That will fulfill, not you provide you get basic happiness. needs You will, fulfill you करने will के be I लिए think money satisfied. You will be required. satisfied. You will be happy after लेकिन एक earning money पॉइंट के only when टाइम you will be एक on a टाइम skill. के बाद वो फिर yeah. मैटर बहुत कम I करता है। think we are बेसिक repeating the नीड्स हमारी points अगर again and फुलफिल हो again. जाए तो उस टाइम के Take a बाद फिर case. मैटर नहीं करता है। Yes, Varsha, take a case. If you are हाँ working more than 16 hours, how will you get happiness? You are not giving your time to yourself and as well as family. You are only earning family, money. So yes. how will you get what you are the responsible? Money is not the responsible here. If So you have I have never said कि आप Yeah, Yeah, I think Vivek is talking on the right मैंने तो path. वो बोला ही नहीं ना। Exactly. Time management also plays an important role, not only money. Keeping money aside would I actually agree help with us to think in a broader prospect. जैसे विवेक ने कहा, टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है। अगर हमारे पास टाइम ही नहीं है वो सब करने का, तो हम वैसे भी हैप्पी नहीं हो पाएंगे, इवन इफ वी आर हैविंग नथिंग इन आवर हैंड्स। हमारे को टाइम साथ साथ उसे डिवोट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम खुद से निकाल के, जैसे पूजा ने बोला था फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये हमें इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा, सो दैट मनी Yeah, होने के exactly. You साथ have to साथ और find some मनी another way to be happy. Okay, money is not the only factor. This is the point. You have to कई बार find a लोग way. ऐसा होता है कि मनी के Happiness लिए from ओवर inside. वर्क You करने have लग जाते हैं, तो to जितना you ओवर have वर्क to do करते हैं तो some माइंड पार्शली को भी अग्री you have इफेक्ट करता to हूँ। like और करता मैं है। एक और but पॉइंट ऐड at करना the चाहता can हूँ same provide you time, कि happiness. but ये at the जरूरी same नहीं है, time, you also ये जरूरी need Can नहीं provide you कि happiness. जिनके पास पैसा नहीं अगर होता, तुम दिन के 16 घंटे जिनके काम पास पैसा नहीं अगर होता तुम दिन कि के वो 16 घंटे काम हैप्पीनेस नहीं करते रहते, वो you खुश नहीं will रहते। not end up in get देखो happiness. Yes, यही Pooja. चीज मैं कहना चाहता हूँ वो कि जिनके पास ऐसा पैसा नहीं होता वो खुश नहीं रहते, खुश सब रहते। बस यही मैटर करता है कि आप अपनी लाइफ को कितनी पॉजिटिव रहते, जितनी भी आपके प्रॉब्लम्स आ रही है आप उसको कैसे टैकल करते, वो सबसे मैटर करता है। अगर आपके I पास think पैसा हो या ना mindset हो, is everything. या I Mindset, just want to mindset add is one thing. I everything. just want to add one mindset is thing. That the person everything who or have money, na, peace of mind is everything. No, the person who Kalpesh, have money. I not just I'm want to add one thing. I just want to add partially that guy. agree with you, Want to but quote after that guy. some time, if you have a family, you need to give food. And how will you give food? You won't have money, you won't have a food. So there is a requirement, sufficient requirement of money here. If you have a child, you want to give his birthday gift, how will you give? If you have a better money, you will give better gift. So there is a sufficient amount of to give happiness to your family. Money You is just want I required for a think we should survival. not Money is just quantify. for a survival. Again, Money the is just point there is for coming over bread here and is butter. like we're Okay. trying to If you have quantify money the for bread gift and with the butter, then money. that is enough to अगर live a ज्यादा life. That पैसा will होगा not इसका provide you मतलब ये happiness. नहीं है bread कि and हम एक butter अच्छा is गिफ्ट दे पाएंगे। I just ये want to हमें add one कंपेयर thing. नहीं That करना money. add चाहिए। a आई थिंक point. जो Samrita, रोड साइड पे भी हमारे Suppose we money are से हम हैं, gifts और guys, इससे even they I are think trying Pooja, to you take hey as a guys, negative just wait. sense. I'm Guys, just saying I here would like to to add give a your point bread and that butter to your family, money you से need money. money से I हम लोग just want प्लीज to प्लीज interrupt that प्लीज guy. प्लीज Okay. सोनू कुमार को बोलने दीजिए, उन्होंने अभी तक बोला नहीं। money सोनू कुमार को बोलने दीजिए, I would like to add a प्लीज point. Suppose प्लीज। that we are traveling with family for happiness by railway. Then for happiness, so we are spending time with family. But to run the railway, we have required fuel, and this fuel come for money. So we cannot completely ignore the money. Money, Yeah. Money is one happiness. of the factors. That's what I'm Yes, saying. yes, Money is one of the factors to be is an happy. important part of Because life. money is completely just ignore only that. for bread and butter. Money is just only for bread and butter, not more than that. If you are getting bread and butter, then that is enough to live a life. That is not enough to No, be Piyush, happy. I'm So partially agree. happiness Money is is a not only relative for the term. bread and butter.
there. Suppose that if you want to give your better education life for your children, how will you give better education life in this competitive world? It's not possible with just to give bread and butter.
So if you want bread to and butter, educate and yourself, money is education is also happiness. getting costlier day by day. So we have to also focus on But the your money. Money child is also will important. your child Without will money, be we left can't out, do anything. and your But child will be left out. we have Also, already discussed that money is also Bro, important the at point one is money extent. is providing your happiness or not. You are adding Yeah. your Money children We are will education, deviating you from are the adding your point मुझे right लगता है now. will आप bring काफी Yes, yes. स्पेसिफिक हो रहे हो। grandparents your child बस left livelihood, you out. are जनरल adding टॉपिक your ये है Without mother कि giving your full livelihood. हैप्पीनेस happiness. देगा या नहीं मनी। Happiness is See, provided if you or don't not. able money to will give your child bring education, pleasure, you will not get the happiness. I think happiness. let's not go into कि अब मनी कैसे हमारे को हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा। Yeah, We have to exactly, quantify, Yes. हमें उसे करना I क्वांटिफाई think हैप्पीनेस के साथ था। I'm not able to express myself. I'm trying to convey here is that if you want to give your child a better education, that result in your unhappiness, that you are unsatisfied, that result in Money unhappiness. is one of the factor by which you can give a child a better education. Just try to understand. Money is one of the factor. Money is just one of the factor by which you can give a Don't better make education it to your debate. child. It's not the I factor that is providing the happiness. We have to discuss on happiness. partially agree with I am partially agree with Piyush. जैसे कि आपने बोला कि मनी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट हैप्पीनेस को भी देखा जाए तो हैप्पीनेस भी कई तरह की हैप्पीनेस होती है। अगर आप बच्चों को हायर एजुकेशन देना चाहते हो, बट यू हैव as mindset that you have social responsibility, you are also thinking about other poor students, so that is other type of happiness. And we can survive with a fixed amount of money. Money is not so much important. If you have a lot of money, you don't know how to manage money. If you know how to take a social responsibility, also gives happiness. Your family responsibility also gives happiness. So there are different type of happiness we can do by the money. Yes, Karthik. देखिए मैं totally agree with Karthik के पॉइंट से और एक ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला कि एजुकेशन जरूरी है। देखिए ये जरूरी भी नहीं है कि जिनके बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाता है वो भी खुश रहेंगे। Exactly, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ मनी आपके पास मनी जितना हो या ज्यादा ना हो, IFC आप जैसे हम कितनी स्कूल की लाइफ ही को बात करें तो पॉजिटिविटी जितना लेते हो ज्यादा आप इनपुट जा रहा है मनी का, उतना ज्यादा ही बच्चों को अलग अलग चीजों में घुसाया भी जा रहा है और वो उससे भी परेशान हो जाते हैं। बुलिंग वगैरह ये सब और कॉमन हो गया है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। आई डोंट थिंक इतना इन्वेस्ट करके भी वहाँ हैप्पीनेस मिलेगा, वो गारंटीड है उसके साथ। एजुकेशन से I'm agree with you. Yes. Suppose that anyone have talent to और गवर्नमेंट चलिए हम एक बहुत केस सारे ले ऐसी लेते हैं। पॉलिसी सपोज चलाती है, स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप वगैरह होता है कि उससे भी हम अच्छे एजुकेशन दिलवा सकते हैं अपने बच्चों को। जरूरी नहीं है कि पैसों से ही एजुकेशन दिलवाई जा सके। इसके अलावा कई गवर्नमेंट स्कूल भी है जो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। Suppose that any of us have a talent of playing cricket. If you have not money, how you can take admission in a good cricket ground, and how you can facilitate to buy all the stuff? For your vision for completing. So if you relate that only the cricketers are belong from richer family, that's what you are saying, that cricketers belong to the richer family. This is not true. If you have passion, if you everything that you can exceed, money is not the factor. India also running It's just one of the factors. Right now, talking of Olympics. Olympics, yeah, we have just look at the won Olympic medals. guys. They are not from the richer guys. They are not from the richer family. We have won maximum medals from them. But Money at the is just root the thing that level, will at the make your root life level, if you comfortable, want to not more give a than that. trial, I am saying that right now government is focusing on that. That the poor student, एग्जांपल दे सकते हो जो आप बोले अभी, जो स्पोर्ट्स में जो पर्सन है सारे रिचर फैमिली से जाते हैं। मैरी कॉम को आप देख लीजिए, वो क्या कोई बहुत रिचर फैमिली से थी? ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है, Money but will some just of the make your life cases a bit comfortable. आई थिंक डे टू डे That लाइफ you are में not earning the छोटे money. छोटे But इंस्टेंसेस भी जब Just होते हैं make your हमारे life साथ a तो वो bit हमें खुशी comfortable देते than हैं। that one that उसमें is just हमेशा earning the मनी money. का इन्वॉल्वमेंट ना भी हो तब भी हमें खुशी मिलती है उन नहीं होता इंस्टेंसेस है से किसी भी जो डे टू डे छोटी लाइफ में छोटी हमारे साथ हो रहा The है। person who is चाहे not स्कूल earning, में एक the person who is एप्रिसिएशन ही not क्यों earning ना the हो money किसी will बच्चे say के this लिए, type of line वो भी that एक money हैप्पीनेस will को provide काउंट your करता happiness. है। That money मम्मी will, पापा the को टेस्ट person, के मार्क्स just दिखाना, ask from a उसमें person अच्छा who is इम्प्रूव earning a lot करके of money, दिखाना, a वो भी person who is हमारे लिए earning a lot. हैप्पीनेस प्रूव Okay, करता है। they will simply say that money is not enough to buy happiness. This statement is given, must be given by a person who is not earning money. They will simply say it and say money will buy happiness. This is not the true. This is totally not true. yes, This is I am actually agree. not true But because after डे some टू डे time, लाइफ में if भी you तो हम want to यही travel देख रहे हैं ना। Money with your will make your family, life a bit this comfortable vacation you as need money. compared to the person who is not earning. If you want, I'm saying here, if I'm agree with you, but if you are
to travel, how can you afford to travel if you don't have sufficient money? So you just that's what I'm saying, that money will be a I'm not factor saying that will make that if you want to travel, say you मनी want to के travel, you have लिमिट excitement, Let कितना me एक्सटेंड you तक must हम have कर money. सकते If you हैं, have money, let then me only you लेकिन can उसमें think of traveling. हैप्पीनेस The one who हमेशा is नहीं not earning होगा will not कि think एक of फैक्टर traveling. वो रूल आउट कर रहा है Let कि me नहीं. complete myself. I'm not saying that Music simple अच्छा life लगा is a तो boring life. अगर I'm किसी को saying if travel you want, if your happiness is in travel or in a vacation, if you want to travel, that money is needed here in this case. I would like to add a point. Just a simple code added by Pankaj Tripathi. Okay, he is not from a very big family. Okay, but he is travel all over the India. Just because the tickets are not, if you want to travel India, na, the tickets are very cheap. The dharamsala are available on every station, and the base there are gurudwara where you can give every meals are provided. Okay, this is not that cheap that you, if you don't have money, you will not travel. If you have aggression, if you have enthusiasm, you will do anything. If the point you have said that the I sports person think are we are not from the richer deviating. family. They have only the Yeah, passion. yeah, we are हम debating टॉपिक से काफी डेविएट हो चुके हैं First of all, why हम are you टॉपिक turning से on me? काफी I'm डेविएट हो just चुके trying हैं to express हम myself. एक इतने सारे सब कैटेगरी बना दिए पैसे के पीछे हम्म. बस एक हमारा टॉपिक इतना सिंपल है कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस हमको हैप्पीनेस के मनी के फैक्टर को हैप्पीनेस से लिंक करना है. हाँ वैसे तो देखा जाए तो जो ट्रैवलिंग करे जो मतलब फर्स्ट एसी में ट्रैवल करते हैं राजधानी में ट्रैवल करते हैं वो भी क्या खुश रहते हैं क्या. Exactly. मैं वही जरूरी मैं नहीं एक है पॉइंट ऐड करना पॉइंट चाहूंगा ऐड इसके करना अंदर. चाहती हूँ. जैसे कि विवेक ने जो भी बोला जॉब कर रहा है, हैप्पी कोई वाला अच्छी जो जॉब पॉइंट कर है रहा ना है, अच्छा वो पैसा हम कमाता है, हमको लेकिन इतना वो खुश उसका कर ड्रीम जॉब देते नहीं हैं है कि कि वो उसमें उसको मनी पसंद का नहीं लिंक करता उस भी जॉब नहीं को आता करना, है तो कि क्या भाई वो हैप्पीनेस रहेगा उसका, जनरल तुम्हारा है, बेसिस पे लेकिन भी अच्छा अगर नहीं हम रहेगा बोले कि उसके अगर लिए. हमारे बॉस हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं वो भी हमारे लिए एक छोटी सी हैप्पीनेस है उस पॉइंट पे. तो उसमें कहीं भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता एंड डे टू डे बेसिस में ऐसी छोटी छोटी चीजें एडअप करके हैप्पीनेस को कंट्रीब्यूट करती है. हमेशा और मनी कहीं I बाहर want जाके to add खाने से ही Exactly, खुशी I मिले totally agree. या I कहीं totally जाने agree. से ही This खुशी is मिले this is वो why जरूरी as नहीं as है a बिकॉज person I'm who हमारे is लिए agreeing, बाहर but जाना you इतना cannot deny, एक्सपेंसिव no. होता है this वो भी is the डिफिकल्ट You होता can't है. this deny is the that. reason why a I person want has to the add money and one not point that on happy, this. because these are the factors But that make a person unhappy. We started thinking that this will factor will make us happy, this will factor will make us happy. Say a child who is just born, or say a child, a 10-year-old that is more happier than us. We are earning, na? That is more Happiness, happier. happiness. If I money yes, buy yes, completely happiness, agree yes. with if you. I money want buy to. happiness, I want. Depend Yeah, upon the if money age. buy I happiness, would then like a to add person who one. is earning will be more happy. But say look at a child who is in 10th class. Who is in 10th standard. Okay, he is I too much complete. happy. He is enjoying his life, but not that yes, man. I He don't have. I completely agree with you. I Yes, I also agree. Happiness depend upon the age. Like the child, they जो are more बच्चे होते हैं happy. उनको पास And उनको पैसों का इतना कुछ पता नहीं होता फिर भी वो खुश yes, होते हैं क्योंकि now we are उनको now छोटे at छोटे this age अप्रिशिएशन we are looking for मिलते रहते हैं money. स्कूल But से एंड as we grown up like higher age, then we are looking for fame or high personality. So happiness is just a relative term. It depends upon the age. So Sonu, in this case, I'm partially agree with you totally. But this is no money is not responsible for unhappiness. Here, the some of other thing that you wanted your fame. Here, no, money is not responsible for your unhappiness. But we can say that money is the driving force money which motivates us to do some work which Yes. gives us joy. So we can yes use yes Yes. money as a Suppose driving that force. you are Yes, earning money is you a are source earning of money pleasure. and you are not passionate about your job and you are earning money from that. So you will be end up in unhappiness because you are not following your passion here. Hmm. You are earning money without your passion, so you will end up in unhappiness and money will और end I up also add getting to the want to add one more point. हम सबने गेट की तैयारी की है PSU ज्वाइन करने के लिए. उसमें ड्राइविंग फोर्स हाँ वो वर्क कल्चर वर्क लाइफ बैलेंस सब है बट मनी भी एक ड्राइविंग फोर्स है उसमें. तो ये वाली जो चीज है But मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जैसे कि अगर यूथ है तो यूथ I को अगर जॉब नहीं think मिलती तो क्या इसमें खुश ये रहेगा. ज्यादा तो मनी भी एक without passion इम्पोर्टेंट और फैक्टर without है interest. जिंदगी के लिए. If अगर you are जॉब working नहीं है तो without वो पैसा passion नहीं कमाएगा, and पैसा instead नहीं of कमाएगा तो getting money खुश भी and नहीं you रहेगा. are तो उसके saying अंदर that वो you are इफेक्ट डालती है. जैसे कि यस वही है विवेक जो कुमार ने हम कहा काम कि कर रहे अभी भी हैं अगर एंजॉय आप करना ज्यादा जरूरी है. अगर आप अपने पैशन को फॉलो जरूरी करते है. हुए मनी बहुत सारे कमाते हो कैंडिडेट ऐसे और your money you is are not earning responsible money तो हो by जाता following your passion, लेकिन बट so then money बट can वो give you happiness. If you are not following your passion and you are earning money by तो doing PSU ज्वाइन overtime कर and लेते each and बट उनको everything, हैप्पीनेस नहीं मिलने not की वजह से focusing on your health, so वो it लोग स्विच करते हैं बाद में कंपनी अपना. तो आपको अपने अपने Don't पैशन को देखते हुए
मनी बाई करना है, मनी अर्न करना है, उसके हिसाब से हम हैप्पीनेस कर सकते हैं। और जैसे कि मनी के पीछे अगर भागने की बात करें तो जैसा कि ओवर टाइम लोग करते हैं, बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर हेल्थ, सो इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू फोकसिंग ऑल द थिंग्स एंड देन बाय No, just ask from that person. Okay, just ask the from more that person who Kartikeya, is I doing think overtime. If you are Naman not happy wanted to to do add that overtime something to person, a topic. the person who is Let's doing overtime, just ask from that person. Is he happy to do that overtime for money? No, he will say no. He will not ready to do that. Just ask from that. वो लोग He is not happy. वो लोग करते हैं फैमिली के हैप्पीनेस के लिए कि फैमिली खुश रहे और उनकी फैमिली की जो बेसिक नीड है वो कंप्लीट हो सके। That's why they do extra just overtime. because it's system requiring, they are doing. Just because system are requiring that you have to do a night shift, that's what they are doing. No person is able. No person wants to do a night shift. यहाँ पे टोटली पार्शियली एग्री विद पीयूष। अगर यहाँ दो केस बनता है, अगर जैसे कि जो ओवर टाइम की हमने बात की थी, अगर वो बंदा ओवर टाइम कर रहा है और उनके मनी को उसके हैप्पीनेस हो रही है, तो that will be the case of money can buy happiness because of he is working for the family and he is working for bread and butter for the family, so that will be the case of money can buy happiness. Okay, बट जैसे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जैसे मान लो किसी का ड्रीम जॉब है कि वो बिजनेस ओपन करना चाहता है, लेकिन उसके पास मनी नहीं है, तो मनी कमाने के लिए उसको ऐसी जॉब करनी पड़ेगी जिसमें वो कुछ नहीं है, लेकिन वो जॉब से जो पैसे कमाएगा उससे अपना नया वेंचर शुरू कर सकता है। तो एक तरह से मैंने उसके हैप्पीनेस के लिए एक रास्ता है, पूरा उसका जैसे कि मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ इसमें, जो and partially agree with the Naman. He is saying that he is himself unhappy but giving bread and butter to the family, giving bread and butter to the family, but he is himself unhappy by doing overtime. I would like to add one point. Because different happiness index is released by some organization which reveal where the country stands. Just by listening the statement of just by listening the statement of the generic topic rather than being point specific to every professional. I don't think so that was required. हम एक केस स्टडी की बात करें, जैसे कि इंडिया की, I just want to add one thing. Just listen, guys, listen. I just want to add one thing. You know the happiest city in India. Just know the happiest city in India. Kanpur is this year. Kanpur is rated the happiest city in the India. Okay, and just look at the per capita income of that city. Per capita income of Delhi, Bangalore, Mumbai are much more than the Kanpur, but Kanpur is still the happiest city in whole India. I also want to add one point इसमें कि जैसे भूटान है, वहाँ पे ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स है। और we talk about इंडिया की जो जीडीपी है वो सबसे मतलब देखा जाए तो वर्ल्ड में ज्यादा है, बट वहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स में देखा जाए तो इंडिया सबसे मतलब सबसे नीचे तक नहीं, stand on 130 around. So happiness maybe the criteria India is falling considering down all the in factors. this happiness index. Maybe India is falling down in this happiness maybe because of this statement. From that already we are in the money will buy you happiness, and we have started earning money, and then we realize that this is not buying happiness. Then we realize, then we think that we look at the data that India is falling in the downward of this list. Okay. I want to add one more point. जो कार्तिकेय ने point बोला था कि we should enjoy what we are doing. तभी हम लोग खुश रह सकते हैं, सिर्फ पैसे के पीछे भागने का कोई सेंस नहीं है। इसमें जो शार्क टैंक आई होप सबने देखा होगा आपने, उसमें जो पीयूष बंसल थे लेंसकार्ट के CEO, he was working in Microsoft and it was such a big firm and he left his job to start his own venture. So we can see कि उनमें जो पैशन था उसके कारण उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया और आज इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। So exactly that's my point कि मतलब जो चीज में पैशन है वही करना चाहिए। And mental health, we are talking हैप्पीनेस से हम मनी कमा सकते हैं, लेकिन मनी से हैप्पीनेस नहीं, कभी भी हैप्पीनेस नहीं ले सकते हम लोग। हैप्पीनेस के साथ में अगर कुछ काम करेंगे तो उससे Can you conclude that? Yeah. Yes, sir. May I conclude? Okay. So if we just look at this the discussion that we have towards the money can buy happiness or not. So from our group, we come to the point that money is one of the factor that can give you a bit comfortable life as compared to one that is not earning. So money is one of the factors that will provide you the happiness, but this is not the only factor that will provide you happiness. This is just one of the factors. That if you say that money is the only thing that will provide you happiness, this is wrong. But if you say money is a factor that can provide you happiness, this is just one of the factors that comes from our group discussion. Thank you, sir. Okay, so Arun, can you conclude? Arun, can you hear me? Arun, am I audible? Okay, Sonu, please conclude.
Okay, sir. So Yes, we you had a are audible. wonderful. Yeah, go ahead. Yeah, Sonu, go ahead. Okay. Thank you, sir. We had a wonderful discussion. As we have discussed about that money are equally important. We cannot ignore money. Money can buy money. From money, we can buy our basic needs that are required for our day-to life. But happiness are just different terms. It depends upon the age. Because a born child do not need of money for that. They are more happier than us. But as we grow, like at our age, we require money, so we are looking after them. But as the age grow, like when we become old, we are more required for fame or being healthy. So money, so happiness we require when we happiness is a relative term. So happiness, in this happiness, we consider the upliftment of the other people by doing the good deeds. This is all about. Okay, so Naman, conclusion. Yeah, thank you, sir. Thank you for giving me the opportunity to conclude today. Today we have discussed that money can be a tool to reach the happiness. Like money can help us with health problems and many other problems related to life. But money cannot buy the happiness. Happiness comes from inside of the person, like with the peace of the mind. For happiness, we can do small things to big things, like spending time with our family, making a good job, and a better career. These things can give us true happiness. But money can be just a tool for the happiness. Thank you, sir. Okay, so let me give feedback to you first individually, and then I'll give you the topic feedback, how it is to be done. So, the first category is those of you who have spoken, who have participated, good or bad, but they have spoken. So, Vivek, Karthike, Piyush, then Sharmistha and Varsha, you have spoken. Those who have not spoken are Kalpesh, Naman, and then Pooja, also not that much, and Sonu. So you have participated less. That is number this. There is a segregation actually among all of you. Now, Karthike's style of participation, Karthike and Sharmishta is good. I mean, the way you have spoken and participated, that is good. जैसा होना चाहिए, बैलेंस जैसा है. विवेक और पीयूष, आपका थोड़ा सा मेरे को अग्रेसिव लगा है स्टाइल बात करने का, और अनप्रोफेशनल भी लग रहा है. अग्रेसिव एंड अनप्रोफेशनल मैं बोलूंगा. पीयूष, आपको कल भी मैंने बताया था, ब्रो ब्रो वर्ड यूज मत करो, ब्रो नहीं चलता यहाँ पे, राइट? तो आप फिर वो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो अनप्रोफेशनल होता है इसमें जीडी में. सो आपको जो बात करनी है, प्रोफेशनली बात करनी है. यू कैन से फ्रेंड्स, यू कैन से टीममेट्स और समथिंग, बट नॉट ब्रो. सो वैसे विवेक का भी बोला है, लेकिन विवेक अग्रेशन वाला वो लग रहा है, वो थोड़ा सा अवॉइड करो. स्पीक इट, बट keep your gesture, posture and way of talking such that it should not look like aggressive from your side, right? बाकी विवेक, पीयूष और कार्तिकेय बात कर सकते हैं. कीप इट अप, बोलना ठीक है, करते रहो. शर्मिष्ठा, आपने अच्छा बोला है. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर पार्टिसिपेटिंग विद मी, एंड नेक्स्ट टाइम मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर विजिबल, सो दैट आई एम इन पोजीशन टू गिव यू बेटर फीडबैक, बट स्टिल यू हैव पार्टिसिपेटेड. अब बात आ गई या सर वर्षा, आप बात कर सकती हैं, आपने पार्टिसिपेट भी करती हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ टाइम्स यू आर पार्टिसिपेटिंग, that is less. I mean, you need to speak more, you need to participate more, and you need to take the discussion from others. It should not be one way, it has to be two ways. वो बात कर रहा है, उसकी बात को आगे लेके जाना, उसकी बात को एग्री करना, डिसएग्री करना, कट करना, that is what वर्षा you have to do it actually. बाकी आपका अटेंटिवनेस है, पार्टिसिपेशन विजिबिलिटी है, आपका दिखता है कि यू आर पार्टिसिपेटिंग, यू आर एक्टिव इन द डिस्कशन, दैट पार्ट इज देयर. अब बात कल्पेश की और नमन की और सोनू की. यू पीपल लुक लाइक साइलेंट इन द डिस्कशन. जैसे सोनू भी है, नमन है एंड कल्पेश है, आप बैठे हैं और आप आराम से बैठे हैं. नीदर यू आर नॉडिंग नॉर यू आर शोइंग द जेस्चर टू पार्टिसिपेट. सी, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. One, you are trying to enter, but you are not in position to enter. Second is, you are not even trying to enter. So you people are in the second category. You are not even trying to enter, you are not even trying to speak. That is something which is not good actually. So you need to participate, you need to speak, at least show the interest कि मेरे को बात करनी है. वो चीज बहुत important है. That is where you people are to put effort.
एंड अब अगर मेरे को पास करना होगा तो मैं पास कार्तिकेय को क्लियरली पास करूंगा, शर्मिष्ठा को पास कर दूंगा मैं, और विवेक और पीयूष मेरे वो है, मतलब डिस्क्रिप्शन में पास करूं कि नहीं करूं, एंड वर्षा ऑल्सो। सो कार्तिकेय एंड शर्मिष्ठा क्लियरली ग्रीन साइड, पीयूष विवेक वर्ष नहीं, कार्तिकेय एंड शर्मिष्ठा ग्रीन, एंड पीयूष विवेक एंड वर्षा बॉर्डर के ऊपर, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर whether he puts them this side or that side. Kalpesh, Naman, Pooja, and Sonu are on the red side. That is what is finding from my side. So Vivek and Piyush, way of participation is to be improved, and then you are in the green side. Then you are in the I green just side, want right? to add one thing, sir. Yeah. Sir, last day I am in the red zone. At least I come to the boundary. So maybe in हाँ, 2-3 I days I remember will because improve. last time तो बहुत ही ज्यादा odd बोल दिया था ना तुमने। वो लास्ट टाइम तो तुम भिड़ गए थे किसी के साथ, इस टाइम तुम भिड़े नहीं। तो इस बार लड़ाई उड़ाई नहीं किया तुमने, लेकिन अभी क्या है कि वो स्टाइल जो है अनप्रोफेशनल है तुम्हारा। थोड़ा बात बात करो Okay, sir. और उस तरीके से थोड़ा मॉडरेट करो अपने आप को, डिस्कशन को, दूसरों की भी सुनो और उस तरीके से आगे लेके जाओ इसको। And Okay, Kalpesh, sir. you can talk. I heard you speaking. Kalpesh has very good points. Naman can speak, but I don't know. You guys are not participating. Kalpesh, Naman, Varsha, Sonu, you guys are, I mean, good in speaking. Pooja also. अब लेकिन अब participate कम कर रहे हो आप लोग। Participate कम सर वो करोगे और ऐसा रिपीटेड हो गया थिंग आ रही बहुत थी गैप। बार बार में। Tell me again. तो रिपीटेड थिंग आ रही थी, तो बार बार में उसके अंदर नया पॉइंट नहीं बन पा रहा था, इसलिए वो उसमें बीच में इंटरजेक्ट करने के लिए मतलब वापस से वही सेम रिपीट हो रहा था, इसलिए सर फिर वो मुझे पार्टिसिपेट करने का नहीं हो और सर पाता है। एक सर साथ बहुत मुझे सारा लग रहा साउंड भी था। आ रहा था। सर और हम्म। मतलब काफी स्पेसिफिक चले गए थे, मतलब कोई एजुकेशन पे चला गया था, कोई जॉब पे चला गया था, तो मुझे लग रहा कोई बहुत ट्रेवलिंग पे चला गया। एक ही पॉइंट पे घूम रही थी सब डिस्कशन। नहीं तो अगर कोई एक पॉइंट पे घुमा रहा है तो तुम अपना अलग से पॉइंट ला सकते हो, नहीं तुम्हें किसने रोका अपना पॉइंट लाने में। फ्रेंड्स, आई वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस। ओके फ्रेंड्स, कैन आई गिव यू सम एग्जांपल? ऐसा तो बोल ही सकते हो ना आप। फ्रेंड्स, कैन आई गिव यू एग्जांपल, और कुछ ना कुछ बोलो। कि फ्रेंड्स, एक हिंदी में वो कहावत है, आपने सुनी होगी कि पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो कुछ ऐसी बातें बोलो जिससे तुम सेग्रीगेट हो जाओ। somebody says something like that, I'm just giving you an example, तो you get separated from others। तो ऐसा कुछ आप बात बोल सकते हो। वो अगर एक ही बात घूम रही है तो यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आई मीन, यू व्हाई डोंट यू ब्रिंग इट आउट? तो अलग अलग पर्सपेक्टिव इसके डिस्कस करो कि ओके। अब मैं इसको बताता हूँ कि बोलना क्या क्या इसमें बोला जा सकता था। सो द टॉपिक वुड हैव बीन लाइक, ओके फ्रेंड्स, द टॉपिक फॉर द डिस्कशन गिवन टुडे इज मनी कांट बाई द हैप्पीनेस। फ्रेंड्स, आई partially agree with the statement. So money is a very very important resource, not only for individual but for the organizations as well as countries also. And money is important resource, so it can buy many things, but yes, not everything. Now friends, for this topic, if we want to discuss, the first thing we should define is what is happiness. And you all will agree with me friends that happiness is a subjective term and its meaning is different from different individuals. So what I suggest you is like, first let's discuss what the meaning of happiness is for us, and then obviously money as a resource, how we can think it of getting that particular happiness in our life. So now I open the house for the discussion. तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई आपको टॉपिक मिलता है जिसमें कोई चीज को डिफाइन कर सकते हो आप, तो करो। हैप्पीनेस को डिफाइन कर सकते हो आप, और now उसके बाद एग्जांपल देना स्टार्ट कर दो कि फ्रेंड्स, एज ऑफ नाउ गेटिंग अ जॉब मे बी हैप्पीनेस फॉर अस। नाउ friends, let's see this way, we all are aspiring for getting into prestigious Maharatna company. It is not that we cannot get a higher salary job in corporate sector where we'll get more salary and more money, but why are we sitting all here? And you all will agree with me that we are aspiring for something else. It is not the salary or the money. And what is that something else which is going to give happiness not only to us but to our parents? And when parents are happy, even we are happy. So sometimes for some people, prestige and affiliation with the social motive, we are doing something for the nation, that gives us more sense of satisfaction, proud, and that gives us happiness, which money cannot buy obviously. Maybe in the corporate sector we know that people are getting so huge packages, double triple the salary we may get. अब ये चीज तुम देखोगे, ऑब्जर्वर कौन बैठा हुआ वहां पे, वो ये सुनना चाह रहा है। मैं सुनना चाह रहा हूँ कि तुम हैप्पीनेस आईयूसीएल में मिलेगा भाई, पैसा चाहे तुम्हें उतना नहीं दूंगा लेकिन तुम्हें हैप्पीनेस मिलेगा, तो बोलो ना उस चीज को, क्यों नहीं बोल रहे हो वो बात? आप लिंक बैठाओ उसके साथ। दिस इज व्हाट एक्चुअली, एन एग्जांपल देते चले आओ। फ्रेंड्स, डू यू थिंक अ पर्सन हु इज फाइटिंग इन कारगिल और सियाचिन ग्लेशियर, ही इज फाइटिंग फॉर द मनी and he is not getting happiness when you win the you know
war for a country, don't you think our soldiers are happy? I clearly remember the day when Kargil war was won. We lost so many soldiers, and the team there on the Tiger Hill with the flag in the hands, we could see their happy faces. Were they for the money? No. And then come to the next level, that money does not provide satisfaction beyond a limit, but yes, if money is not there, it provides dissatisfaction for sure, because money buys the basic amenities in the life. फूड जो आप बोलते हो, खाना पीना घर रहना, वो तो मनी से आता है ना यार। अब वो भी नहीं है तो तुम्हें चीज नहीं चलेगा। तो यस, नो, इट बॉयल्स डाउन टू कि एक रिसोर्स है मनी, ये एक लेवल तक आपको चीज देगा। अब एक भूखे आदमी के लिए खाना ही हैप्पीनेस है, जिसके पास घर नहीं है उसके लिए घर हैप्पीनेस है, जिसके पास जॉब नहीं है उसको जॉब हैप्पीनेस है। और अगर वो पैसे से मिल रहा है तो उसको हैप्पीनेस मिलेगा। इट्स beggar on the street, right? Beggar on the street, show him 10 rupees, will he not be happy? Forget about 10 rupees, show him 100 rupees and tell me how you gauge his happiness. Forget about that, give him 500 rupees and tell me what is the happiness index for him. So that is actually the point. But now same thing you do and show the money or something to a person who is engaged into something different. आप ISRO के चेयरमैन के पास जाओ और उसके सामने पैसा का नोट गड्डी रख दो पैसे का कि सर here's the money for you. They'll say, what is this? I don't want it. I want something else. उसको चंद्रयान से ही खुशी मिल रही है, उसको लॉन्च करके खुशी मिल रही है, समथिंग लाइक दैट, यू अंडरस्टैंड? तो आपको भाई एग्जाम्पल देने हैं। जब भी ऐसा टॉपिक आएगा फ्रेंड्स जिसमें आप बोल नहीं पाओ, उसमें थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स। एंड एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा होते हैं, जितना तुम सोचोगे तो तुम फ्री होके सोचना। जब GD में पार्टिसिपेट करना है तो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाना उसमें, फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड एंड गिव योर एग्जाम्पल्स इन दैट। दिस इज हाउ यू शुड हैव स्पोकन, राइट? सर मैंने एक वो हैप्पीनेस इंडेक्स वाला किया था, वो कानपुर का रिसेंटली जो आया था, मोस्ट हैप्पी सिटी इन द कंट्री है कानपुर, बट स्टिल मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर आर अर्निंग अ लॉट, बट दे आर नॉट द हैप्पीएस्ट सिटी। वो Because that again, you need to define what is the happiness actually. You need to define what is the meaning of happiness, right? दिल्ली में जो आदमी रह रहा है उसको पॉल्यूशन से डिससेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उसको दिल्ली में स्टे से हैप्पीनेस शायद ना मिलेगा। वो चीज है ना यार, वो चीज आपको अंडरस्टैंड करना है। पार्टिसिपेट करते जाओ, दैट इज ऑल आई कैन टेल यू। और जरूर ये मत भूलना कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, किस जगह बैठ के डिस्कशन कर रहे हो। अगर कभी टॉपिक आ जाए जॉब वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप, तो ऐसा नहीं कि एंटरप्रेन्योरशिप के गाने गाना स्टार्ट कर दो सारे, forgetting that you people are going for job. You understand that? Yes, sir. So we should be job creator rather than job seeker. In one of the GDs, you know, I was doing. People were going for PSU interview. They all were, no, we should be job seeker, job creator, job creator. Conclusion was also that we should be job creator. Then I said, then what are you doing here, all of you? Then go and create the jobs. Why are you seeking job here? So don't forget where you are going, right? Yes, exactly, sir. तो वो चीज नहीं भूलना है। IOCL would not like to listen के you guys are you know after money or something. तो आपको बैलेंस करके वो डिस्कशन करना है। बाकी करो, प्रैक्टिस करो यार, इंप्रूवमेंट विल बी देयर, राइट? एनीथिंग यू वांट टू आस्क और टेल मी नाउ? सर आई हैव वन क्वेश्चन। सपोज दैट सर कोई टॉपिक अगर जो रिसेंटली चल रहा है या जनरल नॉलेज का आ जाए जिसके बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है, तो उसको कैसे लीड कर सकते हैं? उसके लिए क्या गुरु मंत्र बिहाइंड दैट? मैंने आपको कई बार बोला है कि हमारा जो तरीका है YourPedia पे वो यही है कि इवन इफ यू डोंट नो द टॉपिक, हाउ यू कैन पास द GD, वही है थंब रूल। तो उसके लिए कुछ थंब रूल्स होते हैं, जैसे आपने इंट्रोडक्शन जो स्टार्ट करनी है, कैसे आपने उसको हिट करना है। आप कोई भी ABC टॉपिक दे दो, उस टॉपिक के बारे में 3-4 लाइन से ओपन कर दो उसको, फिर चुपचाप बैठ जाओ, देखो बाकी क्या बोल रहे हैं। अगर पूरे का पूरा ग्रुप को ही कुछ पता नहीं चल रहा है, सपोज उसने टॉपिक दे दिया फिजियोमेनिया, इसके बारे में बात करो, किसी को नहीं पता फिजियोमेनिया, किसी को नहीं पता क्या चीज है, राइट? टॉपिक दे दिया, तो आप इनिशिएट कर सकते हो, ओके फ्रेंड्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द टॉपिक टुडे। द टॉपिक गिवन टू अस इज अ फिजियोमेनिया. Friends, this topic has been in news recently and looks like it's a very relevant topic for all of us to discuss. I'm sure you people have heard about this topic, and it has actually the relevance for the people and societies. So I believe there are different perspectives to this topic. We can all discuss, we can give different perspectives. Now I open the house for the discussion and let's start our discussion. मेरे को कुछ नहीं पता क्या है फिजियोमेनिया. You need to speak something like that, couple of things, right? And then चुपचाप बैठ जाओ, फिर देखो कोई तो बोलेगा कुछ, सुनते रहो क्या बोल रहा है कोई। कोई नहीं बोलेगा, बिलीव मी, ही विल कैंसिल द टॉपिक। अगर किसी को नहीं पता कुछ, सब चुप रहेंगे और फिर वो कैंसिल कर देता है टॉपिक। दे हैव डन दैट।
लेकिन अगर कोई किसी ने कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया, बीच में बोला उसने, तो तुम्हें पता लग जाएगा वहां से। फिर तुम Yes. स्मार्ट बनो और कंक्लूड भी कर दो एंड में सुन के, उसने क्या बोला, किसने क्या बोला, Sir, कंक्लूड कर दो। Sir, I just want to add, sir, if the topic is not relevant, or say we are not listen a single word about that topic, and if we start and if we conclude, then that is enough or not? नहीं नहीं, बीच में तो बोलना ही है आपने यार, चुप थोड़ी रहोगे आप। एंड ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता जो रेलिवेंट ना हो। इंग्लिश इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। रेलिवेंस इज अ वर्ड विच यू विल फाइंड, अगर जीडी का टॉपिक है तो रेलिवेंस होगा। सर जैसा कि मैंने सुना है कि वहाँ पे कि जैसे दो टॉपिक भी देते हैं सर, दो IOCL में से 2 टॉपिक देते हैं, मतलब उसमें सेलेक्ट करना होता है एक कैसा? चूज करना होता है। यस सर, तो वो पूरा ग्रुप डिसाइड करता है कि ऐसा? यस, ग्रुप के म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड होता है। Sir, I have a doubt. If someone I am like in this group discussion, I was introducing first, and Piyush has interrupted me. What should I have do in that case? नहीं, फर्स्ट एंड फास्ट, जो फर्स्ट है और जो फास्ट है वो आगे नहीं जाएगा। अगर तुम फर्स्ट हो लेकिन फास्ट नहीं हो तो पीछे छूट जाओगे। यू नीड टू बी फर्स्ट, यू नीड टू बी फास्ट, दैट्स द मंत्र। सर कई बार जब हम बात करते हैं, मतलब ऑडियो कॉल्स पे, अभी जैसे वीडियो कॉल चल रहा है उस पे, तो मतलब 2-3 लोग एक साथ बोलते हैं तो वहां पे बात आवाज आती भी है, कई बार नहीं भी आती, और किसी एक का लग जाता है बोलने का मतलब, और दूसरा चुप हो जाता है। लेकिन जब हम एक्चुअल जीडी में सामने बैठे होते हैं तब कोई एक ही बोल पाता है, तो सर उसके लिए हम कैसे सोच सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी ऐसा हो पाए हमसे? इसका मतलब ये हुआ कि तुम टर्बुलेंट वाटर में स्विमिंग सीख रही हो और स्मूथ वाटर में पक्का स्विमिंग कर लोगी। ये मीनिंग है इसका, कि यहाँ पे अगर तुमने कर लिया तो वहां पे बहुत ही आसान होता है, क्योंकि वहां पे तो ट्रबल होगा नहीं, यहीं पे ट्रबल हो रहा है क्योंकि सब लोग सीख रहे हैं। ओके सर। वहां पे कोई ट्रबल नहीं होगा तुम्हें। यहाँ पे अगर 2-3 बोल रहे हैं, वहां पे तो एक ही बोल रहा है, तो प्रैक्टिस करो, ये तो मैं बोलता हूँ तुम्हें। और ठीक इतनी है सर, प्रैक्टिस करो कि इशू ना आए वहां पे, थैंक यू सर। राइट।